So first is let Tiwari, Deo and Hari alone can finish work in X, Y, Z hours. Okay. तो X फॉर तिवारी, देव फॉर Y, हरी Z का, इसके ये आर्स XYZ मान लेते हैं. देन वर्क फिनिश्ड बाय तिवारी, देव इन 1 आवर. 1 आवर में कितना हो जाएगा? 1/x मान लेंगे प्लस 1/y इक्वल टू 1/2. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. उसके बाद क्या होगा? वर्क फिनिश बाय देव एंड हरी. ठीक है, अभी हमने क्या तिवारी एंड देव का कॉम्बिनेशन बनाया. अब हम देव और हरी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे. देव एंड हरी विल बी इन किस में? इन 1 आवर. ओके, इट विल बी 1/y plus 1/z equals 1/6, which is given in the question. Okay. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? उसके बाद हमने तिवारी देव का कॉम्बिनेशन बनाया, देव और हरी का बनाया. अब हम तिवारी और हरी का बनाएंगे. ठीक है, तो तिवारी और हरी का 1 आवर में कितना होगा? वर्क फिनिश, इट विल बी 1/x plus 1/z equals to 1/3. Okay, this will be your third equation. So from 1 and 2 equation we will get 1/x minus 1/z, which is 1/3. Okay, this will be fourth equation. Now from equation 3 and 4 we get x is equal to 3 hours, y is equal to 6 hours. ठीक है, and z will be 0 hours. So it is clearly seen that Tiwari can alone finish the work in 3 hours. ठीक है, क्योंकि तिवारी का x था और जो दियो है वो कितने आवर्स में कंप्लीट कर सकता है? 6 आवर्स में, विच इज़ y. एंड हरी कैन कंप्लीट वर्क इन 0 आवर्स, है ना. तो वो कर ही नहीं सकता काम अकेले. So this will be the answer for. Second is let Abdul travel distance d kilometer or with speed s kilometer per hour. Okay, then Catherine travel distance d/3 kilometer or with speed s/3 kilometer per hour. Okay, and Binoy travel distance d/2 kilometer और स्पीड क्या होगी? 25/3 kilometer per hour. Okay, so for Abdul it is d/s hours. For Catherine it is d/3 by s/3. So it will be 3 will get cancel out, d/s hours. For Binoy it will be d/2 upon
2s by 3. Okay, this is 2s. So it will be 3d. Okay, it will come above 3d upon, और ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा दोनों 4s आवर्स. सो अगर हम इसमें से देखें, अब्दुल का केस फर्स्ट था, कैथरीन का कितना है d/s, और बिनॉय का कितना है 3d/4s. ओके, तो इन तीनों में से कौन सबसे पहले पहुंचेगा? बिनॉय विल रीच फर्स्ट. सो नंबर ऑफ फेसेस plus number of vertices, it will be equal to number of edges plus 2, or number of faces plus vertices plus, sorry, here minus edges equal to 2. Okay, thus for all solid figure, faces plus vertices minus edges, it will remain constant. Hence for 3 solid figure, sum of faces plus vertices minus edges, it will be 3 into 2, it will be 6. So according to the diagram, let me draw it. Here 2 triangles are given, in between them this is A, B, C, D. Okay. This length is 7 centimeter. This is 10.95 centimeter. This is 13 centimeter. This is 12 centimeter. This is 5 centimeter. Okay, so here we can see AB is 5 centimeter, BC is 12 centimeter, AC is 13 centimeter, and AD 7 centimeter. So what we get? So here AC square will be equal to AB square plus BC square. Okay, so this is 13 square equals 5 square plus 12 square. And because triangle ABC is a right angle triangle, okay, this is ABC, it is right angle triangle. And AC क्या है इसका? डायगोनल है ना? AC is diagonal. So in triangle ACD, it will be CD square equals AC square minus AD square. So it will be 13 square minus 7 square. So CD will be root of 169 minus 49, 7 49 equals root of 120 है ना, 169 minus 49, it will be 120. So 10.95 centimeter will be answer, or you can say approximately it can be 11 centimeter.
So let me draw the triangle first. So this is A, B, C. Okay. Between that lies another triangle. This is E, D, E, F. Okay. And again one triangle lies between them. This is of 1 centimeter. This length is for 1 centimeter. This length is also for 1 centimeter. Okay. And this length is for 2 centimeter. This is 2 centimeter. This length 2 centimeter, 2 centimeter, and this length is 4 centimeter. Okay. So let triangle ABC, it is an equilateral triangle, है ना? With side length कितनी है इसकी? This length is 4 centimeter. Now triangle DEF. Okay, this triangle and DEF and GHI. It is also triangle GHI. It is also two equilateral triangles, है ना, जो कि इसके अंदर है. So side length, now triangle DEF and triangle GHI, it is also two equilateral triangle, है ना, with side length of DEF कितनी है, side length DEF की, it is 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter, and triangle GHI की side length कितनी है, 1 centimeter, है ना, it is 1 centimeter. So now area of triangle AEF. Okay, so first we will see the area of AEF, this one. So it will be root of 3 by 4 AE square equals to root of 3 by 4 2 square 4 root 3 by 4 centimeter square, and area of triangle GHI, it will be root of 3 by 4 GH square. So root upon 3 by 4, it is 1 square root 3 by 4 centimeter square. Okay. So here required ratio will be 4 root 3 by 4 upon root 3 by 4. Okay. So it will get cancelled out. It will be 4 ratio 1. Okay. So this will be answer for this one. Next is speed of train it is given 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में 10 बाय 36. तो 36 कैंसिल हो गया. इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड. ओके, नाउ लेंथ ऑफ ट्रेन विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम. ओके, इट विल बी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम 8 is given. Okay, so 80 meter is length of train. Now let length of platform is x meter. Okay, consider it as x meter. So equation बनाएंगे हम 80 plus x will be equal to 10 into 20. So 80 plus x is equal to 200. X will be equals
200 minus 80, it will be 120 meter. So what will be the length of platform? So length of platform is 120 meter. Next is water volume at lowest level is 7 into 7 into 0.1. Okay, and next level is 8 into 8 into 0.1. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा उसमें क्या होगा 9. उसके बाद जो टॉप मोस्ट लेवल होगा, टॉप मोस्ट लेवल, उसमें क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 0.1. ओके, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर in pond will be 7 into 7 into 0.1 plus 8 into 8 into 0.1 plus 9 into 9 into 0.1 plus 10 into 10 into 0.1. Okay, so it will be 0.1, 7 square plus 8 square plus 9 square plus 10 square. So answer will be around 294. So after multiplying with this, we will get 29.4 meter square. So thank you so much for watching this channel. Do like, share and subscribe. And video पसंद आया हो तो share ज़रूर करना. And keep watching and wait for the next one. So thank you so much.